that will be relevant for. So your first motive, whenever you are doing any sort of research, so that would be that what possible contribution you will be making towards the society. That would be the first motive. Second part, the motive to come up with this particular day would be from part of being a faculty, the portion that I would be concentrating on the research papers. Because nobody knows what exactly are doing. कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, क्या पब्लिश नहीं कर पब्लिश करने के हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. We have got SCIs, we have got Scopus database, we have got conferences, journals. So how to target that? So that would be all. So basically, I will be going to break the session into two modules. The first one is going to be talking about the generative AI tools, how they would be for your faculty development. So into the same session, you will be going on to hands-on training. Different use of AI-based tools. And our target will be there that within the span of 1.5 hours all over the country. We would be trying to generate a research paper. Okay, quality research. How to do that? That is my that would be my task or my job. So, like with that, I would like to finish up and we start with that. Yeah, that's 2 minutes to start. Thank you so much. Yeah, that's good. Now, let's begin our session. AI augmented and for this, I would like to introduce Dr. Prashant, working as an assistant professor from the engineering department at Manupatra University, Rajasthan, in India. He has got more than 50 publications in various journals and conferences of ethics. His primary research area includes IMT and cybersecurity related data. Qualifications include PhD, PhD, MTech in IT, BTech, IT as well, MA in education, PG diploma in cyber laws and LLB honors. He has more than 13 years of teaching and research experience. CPJ welcomes you, sir, and we are very sure that the faculty shall gain a lot of learning from your experience today. Thank you so much. We welcome you, sir. Now, I would like to invite our Director General, Dr. Shiva P and all the senior dignitaries for speech. Can you bring it for that? You there. Thank you. कहाँ से लेना चाहिए? This is not getting too visible. आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करिए. लैपटॉप अपना कनेक्ट आप अपने इंस्ट्रूमेंट ऑन कर सकते हैं. ठीक है. इसको थोड़ा सा विजिबल कर सकते हैं इसको कैसे अंदर कर दूंगा.
नहीं जूम इस पे प्रशांत के जोड़ी and we have to you can hear him. Very warm morning and good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. The energy is not that much. Just wait. Just wait in place. Good afternoon. Good afternoon. Yes. My name is Dr. Campus. Today, thanks to ma'am for providing this opportunity. We will be discussing first of all about artificial intelligence. What it is all about. क्या जरूरत है, क्या लीगल कंप्लायंसेस है, क्यों इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टूल्स पे एम्फसाइज किया जा रहा है। चैट जीपीटी की जब आप बात करते हैं, गूगल बार्ड की बात करते हैं, या चैट जीपीटी जैसे और भी जो टूल्स हैं, when they are producing knowledge, so ownership of that knowledge and when you are working for your own faculty assignment preparations like projects, questions, study materials, notes, then being as a faculty, how you can use the chat GPT as a resource. When students are working with the AI generative tools, the students are smarter than faculty. Always have that in mind. So using chat GPT from that perspective, reliability over reliance over chat GPT is good or not? What are the legal compliances I have already discussed? What about the research ethics and all? So that we will be discussing during this whole part. What industries will also do. So before that, let me see that how many of us are PhD pursuing, how many are PhD aspiring, and how many have been completed the doctorate. So completed the doctorate, how many people have? Sir, thank you. Those who are pursuing PhD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for that, this session would be important. And how many of you are looking for PhD? 1, 2, 3. Okay. We will be touching that part also. So can we have this? This is perfectly fine. अब आपका लैपटॉप में कैसे करनी होगी आपको? तो जनरेटिव एआई है क्या जो बात करते हैं? जनरेटिव एआई है क्या? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर को एक तरीके से ये बताना है
कि ऑटोमेटिकली जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस, द सेल्फ ऑटोमेशन ऑफ योर कंप्यूटर्स वो किस हद तक डिसाइड की जाए, दैट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी जैसे टूल जो है, दे हैव बीन वर्किंग ऑन टू द प्री-बिल्ट data learning models which are learning from the information that you are asking from them. They are keeping the records of that information, and then based on that information they are deciding the further paths, that how to move on with the forthcoming information. So based on that, ChatGPT was introduced, I think, in 2022, 2 years back, and it has crossed, I think, more than $400 million right now. इसके अंदर Microsoft का जो investment आया है with the Azure part, so that is fetching around, you can say, 60% of the market right now. उसी के कंपटीशन में गूगल ने बार्ड उतारा है, जिसके अंदर अगर आप ये लेकर चले तो दैट इज अगेन एआई जनरेटिव टूल based on your this. तो चलिए तब तक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सर्च की जब हम बात कर रहे हैं, PhD भी अगर आपको करें तो रिसर्च और why the research papers are important. See, getting your work published in a good journal matters a lot. When we talk about scopers, when we talk about SCIs, so SCIs are basically targeted for application specific. We are talking in terms of engineering applications, scientific applications, related to science only. So that is with your SCIs. And scopers of databases, that is consisting of a multidisciplinary body. So to maintain that, the Scopus database is very important. So getting your publication at least into Scopus should be the minimum standard that you are keeping for your doctorate. So that should be the motive, and how these tools would be important, I will be showing you right now. Yes, I think.
We want to do that. Before this, I would like to play certain videos for you. So just give them a mic here. Yes, sir. Just keep it down, sir. Just keep it down. I think that's not the voting. You just do me a favor. Well, I'll be saying, please, on the right of the that means that politics for voting. The first to do one to say. Yes. So moving to change the perspective of thinking, working with the computer, working with the cyberspace. तो सिस्टम्स आपके हाथों में ये limited computational capabilities है. The systems we are working on to they are far beyond this.
Okay. Now that chat GPT. चैट जीपीटी प्री ट्रेन मॉडल्स पे काम कर रहा है ये चीज याद रखिए तो स्टाइल होगा वो भी आपको शेक्सपियर का मिलेगा अब राइटिंग दैट लिटरेचर इन द शेक्सपियर आर्ट इज अगेन अ चैलेंज टू अंडरस्टैंड दैट इन द कंप्यूटर पार्ट दैट इज पार्ट इज बीइंग डन बाय द चैट so that is the level of intelligence मैं इस दौरान डीप फेक्स की भी आऊंगा चैट जीपीटी की इंफॉर्मेशन तो मिला है मतलब ये so that is cross validation is important whenever you are generating a content okay for innovation creativity is a big challenge sir काफी आपको बच्चे को क्वेश्चन दिया चैट जीपीटी का आंसर दिया है वहां पर क्वेश्चन करते हैं own creativity of the student or generated by the chat GPT most of the students they are using the chat GPT what should be our
This is a sequence of views that I have specifically downloaded. एक बार आप इनको देखिए तो एक अलग aspect है. Those who are working with Google, Accenture, or Infosys, they have a threat in in their mind. Like artificial intelligence. तो जैसा आपने भी देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जगह पे हमारे पास वरदान समझ लीजिए. तो have the endless possibilities for the search of knowledge. At the same point of time, it is a curse as well. You need to control it. You need to understand how to use this technology with the responsibility. Because वर्ल्ड वाइड वेब पे एक एल्गोरिथम जब कंटेंट को सर्च करती है तो वो ये नहीं देखती है कि जो कंटेंट का सोर्स है वो ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है. वो क्या करते हैं कि डिफाइंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये डिफाइंड प्रोसीजरल कोड को रेप्लिकेट करता है. और रेप्लिकेट करने के दौरान क्या होता है कि जो क्वेरी आपने उससे रीड आउट की है उस क्वेरी को वो सर्च करता है वेब पे. और वेब पे सर्च करने के बाद फिर जो उसके रिस्पॉन्सिव कलेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं वो आपको एक ट्रेंड मॉडल एग्जांपल जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि शेक्सपियर की पोयम. अब शेक्सपियर का एक राइटिंग लिटरेचर या कह लीजिए कि एक लिखने का तरीका है. उस स्टाइल को एज इट इज उसको मॉडरेट करके देना आपके सामने मॉडरेटेड रिजल्ट देना दैट इज द वर्क ऑफ आर्टिफिशियल. तो अगेन इसके एथिक्स जब हम रिसर्च की बात करते हैं चैट जीपीटी से जनरेटेड बहुत सारा रिसर्च कंटेंट है मार्केट में भी आ रहा है. उसके ऊपर अभी जो दो तरीके की बहस चल रही है वो ये है कि उसकी ethicalness, that how up to what extent it is ethical to generate the research content from the chat GPT like tools, what would be the authenticity and all that. So इसके अंदर मैं एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कंटेंट जनरेशन कर रहा है जो टेक्स्ट डिटेक्शन टूल्स हैं. जब हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं तो वो प्लेगरिज्म टूल्स इनसे 4 स्टेप आगे चलते हैं. पहले टर्निटिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट को डिटेक्ट करने का फीचर नहीं था. नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंटेंट डिटेक्शन सर. आप टर्निटिव के अंदर अपना डॉक्यूमेंट लगाइए, वो डॉक्यूमेंट कनेक्ट करके आपको एल्गोरिथम रीड करके किस पैटर्न पे वो टेक्स्ट जनरेट किया गया है वो आपको ये बता देगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो कंटेंट जनरेटेड जो है एआई जनरेटेड है या नहीं है. So again, this is a matter of discussion. I was discussing this matter with one of my friend. He is in one of the prominent university in Delhi. So हमारी बात भी यही चली थी कि ड्यूरिंग रिसर्च मान के चलिए आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अभी प्रोविजन जो है वो ये है कि आपका टेक्स्ट बिलो 10% जो है आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स होना चाहिए. तो आपका जो 10% इंडेक्स बिलो रहा
So that is to be considered as a genuine text. अब उसमें AI कंटेंट कितना अलाउड है कितना अलाउड नहीं है, यूनिवर्सिटी या यूजीसी के बीच में कोई गाइडलाइन नहीं है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन आ चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग है, उसकी गाइडलाइन उन्होंने डिफाइन की हुई है कि AI जनरेटेड कंटेंट जो है उसको टेक्निकल लिटरेचर अलाउ करना है। उन्होंने पीपीटी के अंदर होगा इस तरीके से उन्होंने अपनी गाइडेंस डिसाइड की है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि जब आप लोग थीसिस सबमिट कर रहे हो या आप लोग थीसिस जब जा रहे हो तो आपके साथ एक रिपोर्ट और मांगी जाएगी। इस सिमिलरिटी के साथ साथ आपको एक रिपोर्ट ये भी देनी है कि आपका कंटेंट है वो कितना परसेंट सही है। देखिए जिंदगी आपकी बड़ी बुरा मुश्किल में डाल देगा। हमारे हाथ को कैसे नहीं या आपके डिलीवर करेंगे ये सवाल लगातार होते हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं हम सब के तब से बच्चे कई कंपनी चार्ट बोल के रेस हो गए और अब तो इसे लेकर वो भी कर रहे हैं कि सब दुनिया के अगवानी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। किस तरह के इस्तेमाल की तैयारी इसका अंदाजा तो इसे बनाने वालों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कहा है गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म माना डॉक्टर जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च की और इसी रिसर्च को जरिया बना चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम। अब हिंटन ने कहा है कि उन्हें अफसोस है कि वो रिसर्च से जुड़े थे क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी से इंटरनेट पर बहुत खबरों और अफवाहों की भरमार होती है। जब AI जैसी तकनीक हमसे भी ज्यादा समझदार हो जाएगी तब बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हाल ही में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रही है ये इंसान की इंटेलिजेंस या समझ से बिल्कुल अलग है। हम इंसान हैं और ये एक डिजिटल सिस्टम है। समस्या ये है कि ये डिजिटल सिस्टम हम पर हावी होता जा रहा है। कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित हो रहे हैं और ये सब लगातार सीख कर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर 10,000 लोग हैं और उनमें से कोई एक शख्स कोई नई चीज सीखता है तो बाकी के 10,000 लोग भी उससे वो चीज सीखेंगे। चैटबॉट जैसे सिस्टम भी ऐसे ही काम करते हैं। वो किसी एक शख्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा होशियार होते हैं। चैट जीपीटी जैसी तकनीक इतना जानती है तो वो इंसान के नॉलेज पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से इस तकनीक पर लगातार काम चल रहा है उसके लिए और बेहतर और सटीक होती जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की जरूरत है। वो हमसे बेहतर और होशियार होने की राह पर है। इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है। एलन मस्क से लेकर योशिदा बेंजियो जिन्हें एआई का कथित गॉडफादर माना है और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर निशा बता तो आपको क्यों ये डर लगा है? कई लोग मान रहे हैं कि कुछ दिनों में इंसानी दिमाग की ताकत भी क्षित हो गई। दरअसल माना जा रहा है कि एआई के कारण 30 करोड़ नौकरियों का खतरा हो सकता है। ये माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम एआई में कर सकता है तो 44% कानूनी कामकाज भी कर सकता है। लेकिन लेबर से जुड़े काम जैसे कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के सिर्फ 6% काम में एआई कर सकता है। यानी यहाँ नौकरियों को इससे कम। कलाकारों को भी ये एआई परेशान कर रहा है कि आर्ट क्रिएट कर सकता है, गाने लिख सकता है, यही किसी कलाकार के काम को स्टाइल को खुद से भी कॉपी कर सकता है। एक दिवंगत कॉमेडी स्टाइल है, स्टैंडर्ड कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखता है, स्टेबल डिफ्यूजन जो ओपन सोर्स एआई इमेज जनरेट करता है, हर वो इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अब कुछ कलाकारों को डर है कि जिस कला को सीखने में उन्हें बरसों लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल बरस। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं है कि कितने लोगों की नौकरी इस नई एआई तकनीक हो सकती है। लेकिन माना ये जा रहा है कि चैट जीपीटी उन लोगों के आर्टिकल लिखने में भी मदद कर सकता है जो बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते। हाल ही में किए गए एक एक्सपेरिमेंट हजारों आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है इससे आगे पत्रकारों की नौकरी को भी खतरा हो। रिसर्च इस ओर इशारा करती है साल 1980 से लेकर अब तक तकनीक जैसे जैसे तरक्की करती है नौकरियों के मौके मिलने के बजाय लोगों को नौकरियों से हटाने के मौके। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि इससे प्रकृति बढ़ी तो इससे एक तरह की औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे मैं उसको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फेल लगाम पड़ा, लगाम लगा करके आपको सीखना, how you can improvise with the your working with the existence of these tools. अभी इसमें जुडिशियल थिंकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं that AI is not able to differentiate the extent of morality. That is again a question. तो वहाँ पे आपका वो thinking brain है, human thinking brain, वो उस AI को जब रन कर रहा है तो वहाँ पे आपकी कंट्रोल होता है ये दिमाग को जो आता है, ठीक है। So will we continue with this? कई इंडस्ट्री और सरकारी ब्रिटेन में सरकार AI को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निवेश करने की बात कर रही है। ब्रिटिश सरकार का कहना है उससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो चाहते हैं कि भारत AI के लिए एक राष्ट्र बने। We want India to become a global hub for AI. हालांकि उन्होंने ये कहा ये देश की सामूहिक जिम्मेदारी दुनिया को AI के जरिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह की सबसे बड़ी तकनीकी बढ़ती है। इससे लोगों के काम करने, सीखने, यात्रा करने, सेहत की देखभाल करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका बदल जाए। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में बहुत कुछ होगा। ये कहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप CPJ के संस्थापक तो आज की बैठक जो व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की डायरेक्टर है उनका कहना है कि एक तक टेक्नोलॉजी आई है उसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए फ्यूचर टुडे इंस्टीट्यूट की है और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बिजनेस प्रोफेसर एनीवेयर का कहना है कि अगले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो अच्छी या तो बुरी दिशा में जा सकती है। सर दो मतलब इस इंफॉर्मेशन देके using your lifestyle और मैं जानते हैं और fantastic using your lifestyle. that rewards. The chief that they join by you chatbot any क्या दुनिया का chatbot का कोई कमाल नहीं और क्या दुनिया इसमें चल रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जिंदगी आसान करने की वजह मुश्किल में डाल This student अगले साल होने वाले ओलंपिक से सुरक्षा के लिए अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं यानी हजारों सीसीटीवी कैमरों में नजर आने वाली किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन टीवी की तरह बता यूज कंप्यूटर को ये है जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं beyond the world, beyond the state, across the globe, exactly. Checking for this time, these artificial intelligence. What do you call it? Artificial intelligence को पता करने की जरूरत है कि ज़्यादा लोग इस तरह के नॉर्मल नहीं किसी भी तरह को जहाँ आपको कुछ अलग नजर आएगा तो ऑपरेटर ने कुछ पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं जैसे कि आग या जमीन पर कोई व्यक्ति क्या लावारिस खड़ा होता है। हमारा तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी लावारिस बैग के बारे में पता चलेगा पुलिस को क्लियर I will be coming to the legal part as well. How they need to be used by the courts judiciary. मसलन ओपी सेरेमनी में 5 लाख तो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा के लिए चुनौती होगा। लेकिन सब इससे खुश नहीं हैं। सुरक्षा के मामले में एआई टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बहुत अच्छा निकले तैयार
आपको इसके पीछे के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स की देखनी है स्टेट लेवल ये पता करने क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। हम किसी की कुछ न कुछ करने की कोशिश नहीं सकते ये जानते हुए हम स्टेट के पासों में सरकारी दे रहे हैं ये न्यूट्रल नहीं है इसका दुरुपयोग हो सकता है। पिछले साल लिवरपूल और रियाल मैड्रिड के चैंपियंस लीग का फाइनल आ गया जो एक केस स्टडी है कि उस हालात एआई टेक्नोलॉजी से मदद कैसे मिल सकती है। मसलन संजीव करना या लड़ाई की तैयारी कंप्यूटर के जरिए सभी सकते जिससे जरूरत के मुताबिक हस्तक्षेप कर सकते आपकी each and every movement will be captured. If you have recognized I think that where is the people collected Friends from new and from no and ये चीज याद है कि कैसे और वो कहते हैं कि हम फ्रेंच कंपनी हम ऐसा नहीं करते पहले है सबको कैमरा अब बहस इस बात पर है कि कंप्यूटर कैमरा अभी और जा रही है और इसके साथ नैतिकता पर बहस कुछ जा रही है फ्रांस में अगले साल होने वाले ओलंपिक गेम्स से सुरक्षा की तैयारी before commencement of my artificial intelligence यानी AI वो खूब चर्चे में are into the legal law framework. कैसे बनेगा इसीलिए कहीं चर्चा है स्पेस आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं इसकी हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस पर आपराधिक मामलों की सुनवाई हो रही है भारत को भारत पर एक व्यापक तस्वीर पाने के लिए किया था साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि उनका फैसला चैट जीपीटी से मिली जानकारी पर आधारित नहीं है लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है जब भारत में जज ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हो इसका जवाब है हालांकि एआई का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है आपको याद होगा कि इस साल के फरवरी महीने में महाराष्ट्र में चली राजनीतिक साल का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट होगा तो उस बहस को ट्रांसलाइट करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया है भारत सरकार अदालतों को अधिकार बनाने के लिए कोर्ट की शुरुआत कर रही है जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और अब का तीसरे फेज में इसका एक अहम हिस्सा एआई ऐसे हम सब के महल में एक ही सवाल होता है क्या जजों की जगह एआई ले सकता है हमने ये सवाल विकास को सीखने का हिस्सा है तो एआई को कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है ऐसा हो सकता है कि आप इंटेलिजेंस का जज बन जाएगा और दूसरा ऐसा मेरे ख्याल में वो अभी के लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से विश्वास हो रहा है दूसरा डिसीजन सपोर्ट के लिए आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जज साहब को पेश कर सकते हैं जब आप कैसे केस पढ़ रहे हो अगर शायद पेज केस है तो इस पेज केस में ये रिपोर्ट का दर्शन के ऊपर महत्वपूर्ण है वो उन्हें आप कंसीडर करें ऐसा नहीं कह रहे हैं जज साहब को आप ऐसे डिसाइड वो बस ये कह रहे हैं कि वो डिसाइड करने के टाइम आप ये जो अभी देखिए केस उस केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से आर्गुमेंट हमें लेने थे वो वर्किंग का कैसे करते हैं वो रिसर्च है बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग पढ़ते हैं वहां से उन्हें पता चलता है कि कौन ये करने में काफी सारा टाइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा करते हैं searching your Manupatra database and then searching your chat GPT और पढ़ने के बाद उस केस में क्या क्या केसेस है उस केस में क्या क्या आर्गुमेंट्स है तो आपको एक शॉर्टलिस्ट बनाने में काफी सारा टाइम निकाल जाता है यूजिंग आप दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसे में लोग एआई की मदद से अपना मामला खुद लड़ सकेंगे ऐसा नहीं होगा कि वकीलों की जरूरत कम पड़े वकील लोग अपनी वकालत जो है और स्पेशलाइज बनाएंगे सिंपल चीजें को करना छोड़ देंगे लोग अपने आप करना शुरू करेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा भारत पहला देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है अभी
कई देशों में AI का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए चीन 1990 से AI को अपनी न्याय प्रणाली में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी अदालतों में स्मार्ट कोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम जजों को मामलों का आंकलन करने, उन्हें किन दस्तावेजों की जरूरत है इसके बारे में बताता है, मामले से जुड़े अन्य संदर्भों के बारे में दिशा देता है। तो सवाल ये है कि भारत की न्याय व्यवस्था में AI का भविष्य क्या है? फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानूनी क्षेत्र पर एक चर्चा में सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस शिवा पुरी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून के क्षेत्र में बहुत कुछ हो सकता है। ये जिंदगी का सच है कि AI कहीं नहीं जाने वाला, ये रहने वाला है और हमें समझदारी, दूरदर्शिता और खुले दिमाग के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI को So these are some of the glimpses that why the AI is important. So my PPT is based on using generative AI based tools. What are the possibilities for these tools in your research and design? So basically generative AI है क्या? So when we talk about generative AI, these are nothing but they are machine learning models which are trained on certain tools, patterns, with a vast of, you can say, vast approach for your information to learn your patterns from the data that you are asking from them to create your innovative content, like you want to create some sort of text, want to create some sort of images, you want to create certain type of audio or visuals for particular query, that is the place to chat GPT or any tool like that. So basically, unlike internet searches, internet पे क्या है कि you will be working with a search engine to search में exactly क्या करेगा, आप एक particular text से related जो आपके web link से वो आपको download करके देगा, and then you will be having an optimization that what would be the prioritized link that are matching with your exact content. But in chat GPT, or you can see the AI generated tools, the content will be provided to you exactly matching to your result in a precise form. Okay. So instead, they will be creating your new content by guessing which word, sound, or picture would be into the next pattern. So they are basically using algorithms to locate and get your existing resources. Suppose मान लीजिए चलिए आपने algorithm create है, you have to walk step 1, 2, 3 and 4. आपने केवल algorithm को इतना बताया और अब आपने उसको कहा आगे चलना है 5, 6 and 7 वो algorithm खुद चलेगा. That is the principle that these tools they are working on. So the second comes is that what are the capabilities and limitations of your generative AI tools? They can respond to your prompts and questions. They can summarize and synthesize your own information. They can also revise and add to the content. When you will say like, the content has been stored. When you say unlike, the content is been revised. So ये chat जितनी भी projects हैं, Bard, OpenAI, they keep the summarized content what you are searching over the internet. वो कहीं ना कहीं उस पर database पे store करके रखते हैं as a backup. Then they can generate creative works like musical composition. If you want to say ChatGPT write a story, they will write a story for you. If you say ChatGPT write a joke, they will write a joke for you. So basically, it's a numerous things that ChatGPT can do for you. November 2023, ChatGPT was released that can be trained to perform specific tasks. Example, Pittsburgh University है वहाँ पे psychology department में assignment दिया गया that you have to write research method courses that has been creating a customized assignment with the help of GPT.
to actually investigate the you can say possibility of the students that what kind of experiment they can do with that chat GPT, what kind of working they can do with the chat GPT, how they can investigate that chat GPT to do their assignments and all that. And various issues related to that have been got studied into this. So customizing the chat GPT with many tasks like tutoring student onto specific subjects, skills and assignments. That was the major outcome जो कि उन्होंने observe किया. That requires a specific challenge. Further is that they are constantly learning and evolving. So deep learning models होते हैं they will be continuously learning onto the content that you are asking, and based on the result they are producing, they are further predicting the further results. So they have certain limitations. Limitations क्या हैं वो ऊपर देखिएगा. With some generative AI tools consistently integrating actual research into text is a weak functionality. आपका जो चैट जीपीटी है अगर आप उसको एज अ रिसर्च पर्पस यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जो वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी है या नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चनेबल पार्ट. सेकेंडली रिसेंटली रिलीज जो टूल्स हैं आपके they have more sophisticated research integration that can be again used as a avatar kind of thing further. So ChatGPT 3.5 was trained actually using the data that was available up to January 2022. GPT-4 जो भी आपका रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ है आपको जो डेटा वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है उसकी आपने 2023 करते हैं. Okay, so now the more plugins are required with that projects that are coming with competition with this GPT part and Bard and Bing. They are always connected to the internet. ChatGPT जो है वो आपके वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड थोड़ा कम है. इसमें क्या है कि आपका Bard है that has been connected to the cyberspace as well. Then they are creating potentially incorrect, oversimplified, unsophisticated or biased responses to certain questions and prompts. Okay. So many faculties they have been concerned about the academic integrity, implications of your students that are developing their assignments, projects using these ChatGPT tools. But yes, at the other part of this thing you can say, so after generative AI, they can enhance your teaching capabilities as well, and they can support your teaching by providing you more accurate and relevant education content with a minimal quick response time. So this can help you with the preparation of your assignments, notes, the content you want to teach in your classrooms, with the ChatGPT, any kind of research assignment you want to do. So that is a game. But again, ChatGPT, you can use it as a valuable resource for any kind of faculty that has been can say involved into teaching. The question is that how it could be used to improvise your teaching and the learning process. So this is a journey from where we actually the AI has been started. It started into the 2010 part. 2010 is the process of translation of natural languages, then providing the words with the meaningful sentences and meaningful phrases and essence that came into 2014. Then having your large language foundation models to cover up these models with a vast range of application. यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं आया था. जब आप ये 22 पार्ट आया तब उन्होंने क्या किया इसको एज अ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया. अभी जो है आपका ये पूरा का पूरा एक अलग से फील्ड बन गया है that has been came up as a dedicated part
for your large language foundation models. So ChatGPT की अगर आप बात करें what exactly ChatGPT is all about, so basically this is a tool that has been developed by the company that is called OpenAI. OpenAI is basically using this model on a GPT approach that is called as generative pre-trained transformer that is a simplified GPT 3.5 that was the first iteration in the GPT series. This is basically downloaded or you can say designed for your natural language understanding. How many of you are from the technical background? आप में से कितने लोग technical background से? Not technical? Okay. कंप्यूटर में दो चीजें हैं, एल्गोरिथम और एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज। आप जैसे यूजर्स के लिए जब कंप्यूटर्स को बनाया गया, तो आपके सब्जेक्ट की आम बोलचाल की भाषा, इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉ, देन लॉ की जो लीगल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन, उस लैंग्वेज का कम्युनिकेशन, उस लैंग्वेज के लिए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जनरेट करना, ये काम जब कंप्यूटर करता है तो उसको कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज। When computer programs are dealing with these kind of applications, so that comes under the NLP part. So based on that higher application of NLP, these tools are designed and developed that we are using right now, all these techniques and all that. So basically we are generating a human-like text-based input that it is receiving and it is giving an output. It is useful for a variety of natural language tasks, like you are asking questions, you are generating certain text that based on prompt, like I have said, I mean, a quote from the Shakespeare, like Shakespeare's poetry and all that. Suppose you want to make certain sort of case information that what are the provisions of IT and then it will give you all these types of information. So basically, this is having a diverse range of internet text, so that is allowing it to capture and reproduce the human language patterns. Again, understanding the computer, you can say, understanding of the computer for the human language requires the support of NLP softwares. Natural language processing जो softwares है वो computer को ये decide और define करने में मदद करते हैं कि exactly जो आम humans की जो बोलचाल की भाषा है उसको कंप्यूटर के अंदर तरीके से information generate करना। So user can interact with ChatGPT through a variety of platforms. अभी इसका ट्रैक करें तो that is the OpenAI's application programmable system API interface that we are currently seeing and using over the internet. It is again consisting parental company that is OpenAI, that is right now meant as a non-profit, but maybe in future it can become as a profitable part as well. So some missions and values have been given over here. So their aim is to use any influence that can be gained over any artificial intelligence generative tools that is meant for the benefit of the humanity. So they are referring actually to the highly autonomous system that can outperform the humans into the most economically valuable tasks. Companies अभी ये predict तो कर रही हैं, but अभी ये future में देखने वाली बात है, whether they will be contributing or not. Now the applications that comes is that research, ethics and security, that OpenAI is basically engaged in development to ensure that security of artificial intelligence should be ensured. So the stress is an important avoiding the competitive use of AI that could harm the humanity or that can concentrate power unnecessarily. Number second part is that access and collaboration to provide public goods and
sharing your research findings. Now the competition between the AI, sorry, the research collaboration between these things, Open AI and Microsoft. ये वाला जो आपका स्लाइड का पार्ट है ये AI and Microsoft के बीच में अभी जो $1 billion एक स्ट्रेटेजिक partnership हुआ है उसके बारे में शो करा है that they will be developing and designing the AI technology in a way that will be safe and beneficial to the human society. Again, Microsoft is having that your Azure cloud. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग अगर जानना चाहते हैं कि what would be the cloud computing, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Azure, sorry, AWS, Amazon Web Services आप लोगों ने यूज की होंगी. Amazon Web Services के अंदर क्या है कि you might have been using that internet series Amazon Prime. Okay, that is one module and Amazon Web Services को क्या है basically cloud computing क्या है. Cloud computing का मतलब ये है that distributed computing के थ्रू आप क्या करते हैं dedicated resources provide करते हैं for designing and developing their products and over cloud. So that is a cloud computing technology man. So in that AWS, there are various clouds that has been designed and developed by various companies. तो उसके अंदर Microsoft ने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है सर, that is the Azure प्रोडक्ट. वो Microsoft का अपना प्रोडक्ट है जो कि वो एज ए क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे उसका मोटिव ये है कि ओपन एआई जो कंपनी है जो कि अभी करंटली एज ए चैट जीपीटी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनके साथ लेकर के लार्ज स्केल मशीन लर्निंग मॉडल आने वाले वक्त में कैसे कैसे इंडस्ट्रियल स्केल्स पे डिजाइन और डेवलप किया है. जैसे कि मैंने आपको अभी जो वीडियो में आपको देखा किस तरीके से ओपन एआई मशीन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड टूल्स आने वाले टाइम में आने वाले वक्त में आपका वर्क बदल देंगे. आज से 10 साल पहले 20 साल पहले आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे या 2098 या 95 में मोबाइल फोन अगर आपने यूज किए हो और जो आज की डेट में आपके पास मोबाइल फोन अवेलेबल है तो वास्तव में फर्क आ चुका है. आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो आपका मोबाइल सिस्टम रिमूव कर रहा है. यू हैव योर गूगल असिस्टेंट, वॉइस बेस्ड असिस्टेंट. यू विल से suppose if I want a tool, I want this, the voice assistant has been provided. Alexa, do this. Alexa, do that. Alexa, give me this. So now these are products. So basically, this is the company. We are working on the natural artificial intelligence. ये सारे artificial intelligence के resultant products हैं जो कि आप अपनी day-to-day life में use कर रहे हैं. Google में आपको सभी application based on this artificial intelligence related है. तो आने वाले वक्त में सारी चीजें जो हैं आपका जो जिंदगी का रहन सहन ये सब चीजें बदलेंगी. सन 2000 से पहले अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं 95 94 सोशल नेटवर्किंग का एक टर्म्स आया था. सोशल नेटवर्किंग के अंदर जो आपके डिस्टेंस जो आप लोग हैं पीछे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने का एक मोटिव आया था. एप्लीकेशन है तो वो जो सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल था वो सोशल नेटवर्किंग जो है कॉन्सेप्ट हार्वर्ड से शुरू हुआ था मिस्टर जुकरबर्ग से. दैट विदिन अ कैंपस अगर कुछ लोग डिस्टेंस पे हैं या कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसेस में हैं तो किस तरीके से उनको एक नेटवर्क पे लाकर के जोड़ा जाता है. किस तरीके से उसके ऊपर लोग जुड़ते चले गए और फेसबुक खड़ा हुआ. उससे पहले ऑर्कुट आया था, ठीक है. ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया, फिर अब इंस्टाग्राम आया. तो अभी वर्चुअल साइबर स्पेस में जितने मेरे पर्सनल फिजिकल ग्रुप नहीं है ज्यादा उनसे जानने वाले मेरे एक साइबर स्पेस है. ये जो साइबर स्पेस आपकी जिंदगी के साथ साथ चल रहा है उसके आने वाले वक्त में ये जो टेक्नोलॉजीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो इसी में जो आगे प्रोविजन है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान या कह लीजिए ह्यूमैनिटी के लिए किस तरीके से अच्छे पर्पस के लिए यूज किया जाए
So that is again a commitment from the companies that whatever the AI model we will be designing and developing, that should be responsible to the society. Technical cooperation is the एक important aspect ये भी है that with the technical collaboration in AI research and development projects जो artificial intelligence की boundary है उनको इस तरीके से explore करना है. So this is empowering education that how the AI generated tools can be improvise your teaching and learning experiences. Before moving on to this part, I would like to play one video for you. So this is deep fakes. Deep fakes. इस तरीके से आपके रेप्लिकेट्स कंप्लीट प्रिपेयर किए जाते हैं. The interesting thing about the details AI person. This is one of the video and yes. So how this thing AI could be helping you for generating your contents. So teaching with your artificial intelligence will be giving you some sort of innovative approach. How? First is content creation. Whatever content you want to teach, you can use the AI tools to create your supplemental learning content, including summaries, study guides, practice questions, and all that. Further, help with writing on your assignments, providing feedbacks to the student that how they could be improvising, suggesting grammar, particularly the style of writing, clarity of thoughts, then encouraging creativity using artificial intelligence. अब अगेन वही artificial intelligence की बात हो रही है, तो artificial intelligence के थ्रू creative writing हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बच्चों को ट्रेन करना, with brainstorming ideas, creating story prompts,
even collaborating with co-written stories, यानी मिलती जुलती कहानियों के बेस पे आप उनको नई कहानी लिखने के लिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए अभी यूज इट और प्रैक्टिस कन्वर्सेशन स्किल्स एंड ऑल दैट सो दैट स्टूडेंट कैन engage in simulated conversation, vocabulary extension that could also be done. Problem solving, maths and science. Virtual teachers again अभी आने वाले वक्त में हम फैकल्टीज जो हैं उनको इस एस्पेक्ट को भी समझना पड़ेगा ऑनलाइन कंटेंट डेवलपमेंट that is also important so that also can be done with the help of these AI generative tools that is ChatGPT and all that you can implement AI powered questions that is Q and answers sessions where student can ask questions related to your course content and all that. Helping the students with learning programming, code snippets, explanation, debugging support, teaching with simulations. Simulation के अंदर क्या है? Giving them a real world environment. Suppose in this particular group, I will set up a virtual environment of learning. So student is entering into that environment. Virtual learning का मतलब ये है कि you are using the virtual reality technology. Example आपको ड्राइविंग सिखानी है तो ड्राइविंग सिखाने के लिए एक सिमुलेटर में क्रिएट करो. That will be giving you a emphasis कि आप actually drive कर रहे हैं then there would be a driving environment to which you will be learning. So that is the use of virtual simulators carrying out experimental scientific experiments into that as well. आपने इसके लिए रिसेंट एग्जांपल में आपको बताता हूं आपने देखे होंगे मेडिकल लेक्चर्स आजकल आ रहे हैं मेडिकल लेक्चर्स में क्या हो रहा है कि दैट दे आर हैविंग द डिजिटल बोर्ड्स और वहां पे एक्चुअल जो बॉडीज है उनके ऊपर पोस्टमार्टम ना करके जो ह्यूमन लेयर ऑफ इनर योर ऑर्गन्स वो एक्चुअली वर्चुअल सिमुलेटर्स के थ्रू मेडिकल के अंदर पार्ट किया जा रहा है सो वी आर हैविंग द engineering part as well into this that is the use of virtual simulation. So with this I will be approaching on to my end of this PPT. So when you will be integrating your generic AI into education, so it is important for us to consider the ethical considerations, monitoring the quality that you are generating from all these tools, balancing it with your traditional teaching methods. At the end of the day, we all are teacher by caste. Each will learn a skill. I am also a teacher. At the end of the day. So additionally, staying informed about the latest advancements and best practices that the AI education be providing for its effective implementation. Before concluding that, there is one last video. Please just watch it. This is going to be a 15-minute video. Okay. And I got a sample of my own pieces. Okay. So what's the difference between me and AI and the representative? AI is also something about everything that is managed to create from data. It's very passion of the past for the choice of passion. Yeah, many things from that. Separate that they have made. It was anybody would have just worried about having a job at all. You what's guaranteed is that the computer generated places and policies will be used in that place. Have this confusion in any structure based slowly creating a comparative system and eventually it will start making impact. But it's not going to be a push of button for it readily. That will happen. That will organize it. And we use AI in the process. This is the
first ones to do something like this in India or have anybody else do that. And we know how many people do it. India is home to the largest steel industry on the planet in terms of the total number of tons produced each year. It employs almost 1 million people today. It is no surprise that the conversation around AI has certainly reached India, but pretty little makers with both curiosity and fun. Shiva P is a national award-winning writer director who has worked both in Bollywood and Hollywood. How are you? How far does AI affect the You know, it depends on how you start. AI, I started describing between learning. If you're ready to see what AI can do, we go back and look at everything that was done before. Understand the correlation between the characters, and within 10 seconds, it will give you the next episode. Which can't do with big life, you know, but the right impact. So I asked ChatGPT, so if you write this for the next generation, 10 seconds. It would be a very interesting idea. What was most interesting about it, that it understood the fundamental model of Muslim, the personal diet of the faith. And if you can understand the underlying moral conflict of the story, then you can get that answer. But it didn't assume it. What it did was, because Muslim was very old, it must have been seconds. But because remember, ChatGPT doesn't get to you. These guys are getting there now. But everything that was ever spun up, unrelated, put it together, found that which was the most thing that people always wrote, that must be a moral. It doesn't actually have a morality on itself. Indian films are big on creating a spectacular experience for their audience. New VFX technologies help them push the boundaries of visual storytelling. But with AI-generated deepfakes engaged in the display of the internet, people often tend to confuse AI with VFX. Ketan Yadav and Harry Burani had one of the biggest VFX companies in India. But it's create these crazy new environments that just don't make sense. From the valid AI for this one. Automation or AI on that because manual is very hard. I am trying the same time the showing the good quality. You just start showing video quality. There is going to be downloading quality. AI, we haven't technologically used it, but yes, certain times we take a lot of references from the images that AI generates in Photoshop, or even any other software for that matter, for generations of DG or background padding or even certain colors, any tenants. That's the only way we have used AI to use. Were you happy with the resolution of the pictures that have come out? Because usually AI companies that we have heard is that it's good for a mobile phone format, but the resolution is not great enough for a instant picture. But what was your experience? The reality with the production, and then also the team that can create AI issues. And what would the orders before us with common. Initially, we didn't get the output of those necessary for people. But when they had to work with how to develop it, make it so sharp as possible. And the team thinks, and as a director, I they had to go to the further. So
there is a very, program as to be on board and how we have got this forward. We're trying to create new areas. I think the market electronics, get smartphone curriculum, a market as the We use machine learning to recreate sharp state and voice to take the local store names in there. The use of AI is not just limited to this. It has entered the acquisition space as well. After the pandemic ended, Calgary got Shiva aka the king of Bollywood, to endorse thousands of small businesses in the country using deep technology. So these man is the chief creative officer at WP India, the marketing company behind this. Started with the name and said this is why we buy this or so and so forth. We had to some 100% campaign. And then on the other side, like, wow, he really defined the whole thing. Of course, we take as a source of technology that fundamentally, therefore making the select. What do you do humans in using technology? Yes, 100%. I think when we go down this generative route, let's say technology enabled route, I would say there was some tech or concern from the team of Child Khan, which was very clear that it cannot be utilized in another way. It should not be used to create something which will not be ideal, which will not be operated or the staff in some. How do you go with that in Child Khan? The final count was 300,000 minimum. This is one ad campaign that went on to create approximately 300,000 ad campaigns. Much of Hollywood was already closed down. The writers were featured its deadline. Now the actors are following suit. Almost all film TV production will drive broadcast film. Histories are similar for both groups of workers, concerned about the use of artificial intelligence and better pay for the age's really entertainment. The right time to have this discussion is now because AI tools are getting smarter literally every second. And so where we are today with AI will be very different to where we are 3 months or 6 months from now. The speed of learning is so huge and so fast that you will be dealing with a very different piece of 2 months from now. Who wants to copyright something? AI has been used to create a lot of or story or film. Who wants to copyright? Because AI is a combination of everything is everything. Got something or a video or image and kind of selling on an online platform, say, as a royalty based thing. That's where that person IP is protected. Now with AI, again, you will see that a lot of versions of the same thing and It's a terrible thing when big business tries to replace you with digital, with robots, artificial intelligence. If we don't stop this now, this maniacal need to make money over allowing people to make a living. in the West, we see this final form to that exactly talking about the things that we're talking right now. But it seems like that we are far from the conversation in Well, we are actually, because there was a good on Programe and registered copyright on his own stuff. So you can copyright your own image and no reason. You can copyright your works, then no reason. So that's one part of the fear of AI as we bring away. So Amitabh Bachchan's voice cannot just be used in a commercial idea. Because these are the copyrighted, it's copyrighted, we will actively copyright because of AI. But the other part is, you know what's happening there, was of course, it was Tom Cruise that was at danger, it was even copyrighted now. But it was the contractor that was trying to say these big players and the extras and all that. You should try and send one.
completely think that the name and likeness can be used without number one, their approval, and number two, without ensuring that there's a permission permitted for them. What do you think is better, the graphics generated with AI or an actual live action? What is better? If you ask me, I will always answer it. Something I think is, that's a very interesting thing. Yeah, something, it is huge, but I don't know, it's, as all can as, anything on the, very much, that is not because Yeah, may not completely take over the VFX, but yes, it can help us in a large way, considering the fact that there are many things that we do, and work on, it takes a long time. Example, something like rotoscopy. So when you consider AI doing it, it is obviously to be much more precise, much more accurate to the rotoscopy. So that is something where we can consider, yes, integrating the AI and the VFX together. I mean, when it comes to virtual filmmaking, absolutely. I mean, just in terms of economies of scale, in terms of bringing costs down, in terms of theaters, in terms of creating worlds within which, the artist can live without really having to travel to those locations. But those are things of virtual production that are already happening, and once AI is being used, in that space. So that's tremendously helpful. Will happen. We are not saying it won't happen. It will come time when we will see videos and companies are actually able to software to be able to react. We tried one recently, already, and that is another one Disney is making for sure for the These are software which are specially built for visual effects studios, by the visual effects studios. a lot of things to do all the time. But the other thing is that a lot of new talent will be able to use AI to make them better shape before students people sitting in the house in a slum, somebody sitting in the slum. Today cannot get a camera, cannot get an actor, cannot get distribution, cannot get all of that. Because the kid in the slum. AI will give all those students available at a very low cost. Everything, oh my actor, I can't get an actor. You get on this. They get home, belongs to you, doesn't get over, doesn't need to speak, doesn't need anything. You will be looking something. I don't. Now, there is an AI one that will soon be looking and say, how much of it even interference with the And it doesn't scale you. Because I'm better. Because I have the ability to bring things out of chaos because of history, because I can see the mysterious, I enjoy the mysterious AI account from that. Because the AI is completely data dependent. But then it's going to be the democratic and chaos. And those who will rise out of that chaos, people that are monitoring the chaos. Alexa, the AI take over the world. I don't want to control the room. I just want to know him. So with that, I would like to thank you for providing all questions and all that. I hope the artificial intelligence tool working and also people and कुछ हद तक संभावना हमारे कुछ हद तक हम इतना ही आपके भी प्रश्न हैं ये प्रश्न I hope the questions commencing maybe one We all have about that the access to everything is bad. yes And artificial intelligence is not an exception to that. I have read and watched one video about artificial robot Sophia about right. So
one journalist asked her, "Hey, what is your motto?" Then that robot replied that to take over the humanity. So don't you think so? Entertaining such thing, which will be taking humanity, for longer run. So we are, taking care of such thing which is not loyal towards us, and which will be definitely harmful. As this is causing 30% or 40% jobs cuts, different industries. Okay. May I have a good answer? Okay, good sir. AI doesn't understand the term loyalty. Yes. It is artificial intelligence. It's not human intelligence, which can judge, which can make the judicial thing, what is right, what is wrong. Judgmental being. Secondly, what we are talking about is emotional intelligence. उसपे work अभी चल रहा है. That is that Sophia project you talked about is one of the aspects. Coming up to that incident, if these things are not properly trained, if these issues are not taken care of, then what will be the drastic result? This result has actually happened in Germany. There was, I think, Germany was the incident. One mishappening was there. One worker was killed by a robotic portion. So definitely, deciding the limits of AI is very crucial. Companies need to understand that designing and developing any kind of model totally based on the profitability is not the thing. You need to consider the social and moral responsibilities as well. So work has been going on. It is again a matter of discussion that creating a human clone would be a good thing or not. It is again a case of judgmental thing that what is right and what is wrong. So it is again AI is a very lethal tool. So your what would be your motive at the end of the day? That is going to decide the if I am having AK-47, if I am picking up that AK-47 for my own defense or to have my to support my propaganda, that is again based on your motive. What you want to do exactly with that AK-47? You want to protect yourself? You want to fight it? That is any other from non-law background and all that, from non-engineering, law background kind of thing. So as faculties, the problem we are currently facing is that we are not able to match up with the results that students are taking up with the artificial intelligence. For example, we are giving them assignment. It feels like as a faculty also our need is lesser now because students are not interested. They think they can get better results to artificial intelligence. So how do you think we can at present curb that? उसके लिए स्टूडेंट्स को जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के थ्रू अगर स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक किया करके डाला तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टूडेंट से होकर माने सीखना और जब आप उस पॉइंट को सोचेंगे तो उसके अंदर क्या है कि टेक्नोलॉजी की समझ आपको पकड़नी पड़ेगी इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको देता हूं व्हेन यू बी टीचिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ टूल और व्हेन यू बी टीचिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड what are the pros and cons of that technology. When you have understood that, then you can tell the student exactly if you are using this particular part. So what are the pros and cons? Then they can be judgmental. That if I will do this, what is right? If I do this, what is wrong? So ये आपका काम है student को बताना बतौर as a guide because you are the mentor. You have seen the life far way ahead the student has experienced. That is what the role of teacher is. Teacher दोनों को साल में देंगे स्टूडेंट को बनाने में ये कुछ आजकल से उनकी टीचिंग में हम अपने दुनिया में एआई जनरेटिव टूल्स कंटेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ कंपनी आ रही है दैट विल असिस्ट यू तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगेन अगर आप कोई पेटिशन कोई लिटरेचर अगर आप लिख करके जा रहे हैं और वो एआई बेस्ड है अगर आप उसको फुल बॉक्स से भी ब्रेकअप करने की कोशिश करें तो मे बी पॉसिबल
कि कोई बार इस एल्गोरिथम पे काम कर रहा है उस एल्गोरिथम को भी टर्मिनेट अपने में ले लो कि एआई जनरेटेड कंटेंट और टर्मिनेटेड जनरेटेड कंटेंट को आपने कितना रिमिक्स किया है उसका भी एक्सटेंड बता दो बेस्ड ऑन दैट जो PhD एस्पायरेंट है फ्यूचर एस्पायरेंट्स है इस तरीके के लॉजिकल टूल्स आते हैं that can give that checks that what are exact what you can say rights and wrongs they have done. I think thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. Please. I just want to ask if I'm talking about the service quality of financial services. Service quality of financial services. Financial services include mutual fund, market, and many other services that we can go on. And how AI is helpful, AI is helpful or not for solution that? Yes, predicting your behavior. Suppose if some stock has gone like this and some stock has gone like that, some stock has gone like that. So based on that business model or what is your you can say that pattern the company has actually gone through. So AI could propose a kind of you can say forecast based on which you can make a judgment whether it's better to invest into that. Number one part. Second is that again, as I'm saying that from being a financial part, AI is giving us a new space to explore the horizons where you can make the investment parts. So from that aspect as well, and definitely if you're saying, you can say like policy bazaar or like various companies might have seen that they are giving you certain sort of results that these things you can buy, these things you can do, these things you can do. Now, if I am going to take that policy or if I am going to take that particular thing from a company, then there are various times that consumers actually do not know what things the company has hidden or selling their products. So you can also take out that information is there. It's in the age in the demand. So definitely AI is going to be very helpful in that near future for your companies. Metaverse is there. Virtual meeting and all that. PwC is working on that. That you can search over this thing over internet and how all these kind of projects AI is there. Any other question? I think we will be having the second session. Yes, sir. Okay. We will be between 10 minutes talking exactly on plagiarism. आपको सबसे पहले plagiarism क्या होता है उसको लेके करेंगे वो ये सेशन आपका मैम समय मैम एंड कर दूं